Hello everyone, this is Pragya Chaturvedi. Here I am to discuss vital signs measurement. So, what is vital signs? Vital signs are the measurement of the body, most basic function. The four main vital signs routinely monitored by medical professionals and healthcare providers. वाइटल साइंस क्या होता है? ये बॉडी फंक्शंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस में। जब हमारे पास कोई पेशेंट एडमिट होता है हमारे वार्ड में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका वाइटल्स चेक करते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है। मतलब उसके बॉडी में टेम्परेचर तो नहीं है, उसकी पल्स रेट हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी रेस्पिरेशन रेट क्या है, ताकि जो हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस है, फर्दर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो वाइटल साइंस रिफ्लेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू इवेलुएटिंग होम्योस्टैटिक बैलेंस. It includes, as I told, it includes temperature, pulse rate, respiration rate, blood pressure. The vital signs are also called cardinal signs. So these are the few purpose why we do vital signs: to obtain baseline data about the patient condition for diagnostic purpose, for therapeutic purpose. Then what are the equipments we use in the vital signs? So first is the vital signs tray. हमारे पास सबसे पहले एक वाइटल साइंस का ट्रे होना चाहिए, उसमें स्टेथोस्कोप होना चाहिए, बीपी एपरेटस होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, सेकेंड हैंड वॉच होनी चाहिए, ताकि हम जो हमारी पल्स रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, उसके लिए जो टाइमिंग अलॉट है उसको हम चेक कर सकें. रेड एंड ब्लू पेन होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम हर चीज़ को प्रॉपरली नोट डाउन कर सकें. पेंसिल होना चाहिए, वाइटल साइन का शीट होना चाहिए. अगर हमारे पास 4 से 5 पेशेंट है तो हम सबका रिकॉर्ड याद नहीं रख सकते हैं, तो हमें हर पेशेंट की शीट को अपने साथ लेके चलना चाहिए, ताकि उसमें कोई करेक्शन ना हो. मतलब जिसका हमने लिया है उसका ही हम वहाँ पे लिख देंगे. देन कॉटन स्वैब इन बाउल. कॉटन स्वैब क्यों लेंगे? अब हमने एक पेशेंट को सारा वाइटल साइन चेक किया है, अब हमें दूसरे पेशेंट पे जाना है, तो हमारे पास जब कॉटन स्वैब रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, स्प्लिट स्वैब से थर्मामीटर को हमने क्लीन कर लिया, ताकि इस पेशेंट से उस पेशेंट में इन्फेक्शन ना फैले. डिस्पोजेबल ग्लव्स हमें पहनना है ताकि इन्फेक्शन ना फैले. ओके. डर्ट रिसीवर किडनी ट्रे जिसे हम कहते हैं, इसमें हम जो हमारा यूज्ड स्वैब वगैरह रहेगा उसको हम थ्रो करेंगे. टाइम टू एसेस वाइटल साइंस ऑन एडमिशन टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा. When client has a change in health status or reports symptoms such as chest pain or fainting. वैसे तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम बेसलाइन डाटा निकालने के लिए उसको वाइटल साइंस करते हैं. जब हमारा क्रिटिकल पेशेंट होता है तब हम 2 आवरली पे उसकी जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम जो हमारा क्रिटिकल पेशेंट होता है उसका हम 2-2 घंटे में वाइटल्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू ए नर्सिंग और मेडिकल ऑर्डर. जैसा हमारे पास ऑर्डर होता है 2-2 घंटे पे, 4-4 घंटे पे हमें वाइटल्स को चेक करते रहना है. Before and after the administration of certain medication that could affect respiration rate or BP, blood pressure. Before and after surgery or an invasive diagnostic procedures. Before and after any nursing interventions that could affect the vital signs. According to hospital, either हेल्थ इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, जैसा हमारा हॉस्पिटल का पॉलिसी होगा हमें इसके अकॉर्डिंग अपने पेशेंट के वाइटल्स को रिकॉर्ड करते रहना है. तो सबसे पहले हमारे वाइटल्स में क्या आता है, टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है 98.6, तो हमें चेक करते रहना है. व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन वेराइज डिपेंडिंग ऑन जेंडर, रिसेंट एक्टिविटी, फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन, time of day, and in women the stage of the menstrual cycle. During the menstrual cycle the body temperature is changed.
The stage of the menstrual cycle. Normal body temperature can range from 97.8 degree Fahrenheit or equivalent to 36.5 degree to 99 degree for a healthy adult. A person's body temperature can also taken orally, rectally, axillary, by ear, by skin. So it is the hotness or coldness of the body. It is the balance बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी. टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है एंड कितना हीट लॉस कर रही है, इसका बैलेंस क्या है. ओके, द टू काइंड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कोर टेम्परेचर. इट इज द temperature of internal organ and it remain constant most of the time to 37 degrees Celsius with range of 36.5 to 37.5 degrees Celsius is the temperature of the deep tissue of the body. Remains relatively constant measured with thermometer. Second one is the surface temperature. Surface body temperature is the temperature of the skin, subcutaneous tissue and fat cells. It rises and fall in response to the environment. जो हमारा surface temperature होता है वो environment जैसा, हमारा अगर environment गर्म है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी, ठंडा है तो हमारी बॉडी ठंडा हो जाएगा. It does not indicate internal physiology. ये हमारी बॉडी में कोई फिजियोलॉजी को नहीं इंडिकेट करता है. बॉडी टेम्परेचर में भी abnormal due to fever, high temperature or hypothermia, high temperature and low temperature. High temperature is hyperthermia and low temperature is hypothermia. A fever is indicated when body temperature rises about 1 degree or more over the normal temperature of 98.6 degree Fahrenheit. According to the American Academy of Family Physician, hypothermia is defined as a drop in body temperature below 95 degree Fahrenheit. Then the alteration in body temperature. Normal body temperature, as I already discussed, is 37 degrees Celsius or 98.6 Fahrenheit. Body temperature may be abnormal due to fever, high temperature or hypothermia, low temperature. Pyrexia. Pyrexia is also called fever and fever is pyrexia. A body temperature above the normal range is 38 degrees Celsius to 41 degrees Celsius, means 100.4 to 105.8 Fahrenheit. Then pyrexia is divided. Hyperpyrexia, a high fever such as 41 degrees Celsius or more, 42 degrees Celsius, leads to death. Hypothermia, body temperature between 34 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Now we discuss pulse. Pulse. What is pulse? Pulse is a wave of blood created by the contraction of left ventricles. Pulse reflects the heartbeat, stroke volume, and the compliances of arterial wall are the two important factors influencing pulse rate. Pulse rate is regulated by autonomic nervous system. Then what is pulse? Pulse क्या है? ये वेव ऑफ ब्लड है जो किससे क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स से और हार्ट बीट से. द पल्स रेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट. किसका मेजरमेंट होता है? ये हमारे हार्ट रेट का, और हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है पर मिनट. एज द हार्ट पुशेस ब्लड through the arteries expand and contract with the flow of the blood. Taking a pulse not only measures the heart rate but also can indicate following, that is heart rhythm and strength of the pulse. Sometimes आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलता है पल्स वीक चल रही है, पल्स फास्ट चल रही है, तो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स. The normal pulse of the healthy adult ranges from 60 to 100 beats per minute. The pulse rate may fluctuate and increase with exercises. ऐसा कुछ नहीं है कि जब हमारी पल्स रेट इंक्रीज़ होती है तो हम बीमार ही होते हैं. समटाइम्स जब हम स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारी हार्ट की रिदम जो होती है वो तेज़ हो जाती है. जो हार्ट की रिदम तेज़ होगी इट मीन्स हमारी पल्स रेट भी तेज़ होगी. The pulse rate may fluctuate and increase with exercises, illness, injury, and emotions. Females ages
12 and older in general tend to have faster heart rates than do males. Athletes such as runners who do a lots of cardiovascular conditioning may have heart rates near 40 beats per minute and experience no problem. Peripheral pulse is a pulse located in the periphery of the body, example in the foot or neck. Apical pulse, central pulse, that is also called central pulse, it is located at the apex of the heart. The PR is expressed in beats minute. The difference between peripheral and apical pulse is called pulse deficit and it is usually 0. Pulse is assessed for rate 60 to 100 beats per minute, rhythms, volume, elasticity of arterial wall. The pulse is commonly assessed by palpation, feeling and auscultation, hearing using a stethoscope. Now we discuss pulse sites. First is the carotid, temporal and apical. Carotid at the side of the neck below tube of the ear where the carotid artery run between the trachea and the sternocleidomastoid muscles. Second, temporal. The pulse is taken at temporal bone area. Apical. The apex of the heart routinely used for infant and children less than 3 years. In adults, left mid-clavicular line under the 4th, 5th and 6th intercostal space. Brachial at the inner aspect of the biceps muscle of the arm or medially in the antecubital space below crease. Radial on the thumb side of the inner aspect of the wrist, readily available and routinely used. Femoral along the inguinal ligament used for infants and children. Popliteal behind the knee by flexing the knee slightly. Posterior tibial on the medial surface of the ankle, pedal and dorsal pedis, palpated by feeling the dorsum upper surface of foot. These are the pictures of the superficial temporal artery, brachial, radial and carotid. Femoral, popliteal, dorsal pedis and posterior tibial. A wave of blood flow created by the contraction of the heart. Now we discuss methods. Pulse is commonly assessed by palpation, feeling or auscultation, hearing. The 3 middle fingers are used with moderate pressure for palpation of all pulses except apical. Assess the pulse for rate, rhythm, volume, elasticity of the arterial wall. Now we discuss respiration. Respiration rate. Respiration is the act of breathing and includes the intake of oxygen and removal of carbon dioxide. Then ventilation. Ventilation is also another word which refers to movement of air in and out of the lungs. Hyperventilation is very deep, rapid respiration. Hypoventilation is very shallow respiration. 2 types of breathing, costal and diaphragmatic. How we do assessment? The client should be at the rest, assessed by watching the movement of the chest or abdomen. What we assess? Rate, rhythm, depth and special characteristics of respiration are assessed. Then rate is described in rate per minute. Healthy adult respiration is 50 to 20 minutes is measured for full minute if regular for 30 seconds. As the age decreases, the respiratory rate increases. Eupnea, normal breathing rate is called eupnea. Bradypnea, slow respiration. Tachypnea, fast breathing. Apnea, temporary sensation of breathing. Then blood pressure. It's a force exerted by the blood against the walls of the arteries in which it is flowing. It is expressed in terms of millimeter of mercury, mm of Hg.
BP is measured by using an instrument called BP cuff, sphygmomanometer, and stethoscope. And the average normal value is 120 by 80 mmHg for adult. Brachial artery and popliteal artery are most commonly used. It is measured by securing the BP cuff to the upper arm and thigh, placing the stethoscope on brachial artery in the antecubital space and popliteal artery at the back of the knee. Pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic pressure. There are two types of blood pressure, systolic and diastolic. Systolic is the maximum of the pressure against the wall of the vessel following ventricular contractions. Diastolic pressure is the minimum pressure of the blood against the walls of the vessels following closure of aortic wall ventricular relaxation. Sites of measuring blood pressure: upper arm, thigh around popliteal artery, forearm using radial artery, leg using posterior tibial or dorsal pedis. Assessing of blood pressure. Purpose. What is the purpose? To obtain baseline measures of arterial blood pressure for subsequent evaluation, to determine the client's hemodynamic status, to identify and monitor changes in blood pressure. What are the equipments we use? Stethoscope, blood pressure cuff of the appropriate size. The blood pressure cuff is used in different size for adults and for the children. Sphygmomanometers. This is the picture showing parts of the stethoscope. Thank you so much. Please like and subscribe my channel.